हाँ जी. So let's continue the discussion. I will again start from briefly सर what is आपके वो माइक में से आवाज नहीं आ रही। okay. How is it now? अभी तो नहीं आई। How are you? नहीं सर। Your sound is very clear. आपके वो पीसी के माइक से आ रही है आवाज। अच्छा, ठीक है. How are you? आप शायद सेटिंग से चेंज करना पड़ेगा आपको जूम की। अच्छा, अच्छा. हाँ. Now? हाँ अब बोलिए। हाँ, ठीक है. That was the problem. Correct. Okay, so let's talk about resonance once more. Okay, so resonance. Okay, so what is the condition for resonance? Main condition for resonance to happen. कब होती है? कब? When do we say resonance is occurred in a series LCR circuit? फेज डिफरेंस जब 180 डिग्री का हो और किसके बीच में? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में। एंड किस फेजर में? फेजर वोल्टेज फेजर, राइट? हाँ यस सर। और तो कुछ है ही नहीं. यस सर। Okay, so you think it is the phase difference of 180 degree और इंडक्टिव between रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। phase difference of 180 degree VC and VL. Second, क्या बोला? Second is Inductive resistance and capacitive resistance you mean have reactance. equal magnitude. You mean reactance. They don't have हाँ resistance. reactance. They have reactance. Sorry. ये magnitude is same, right? हम्म इन दोनों की वजह से क्या हो जाता है अगर ये दोनों ट्रू हो जाए तो? देखो, VC और VL तो वैसे ही ट्रू हैं, बिकॉज अगर ये करंट है तो VC is ahead of current by 90 degrees and VL is behind I by 90 degrees. In the case of, sorry, this is VL, this is VC. ये तो वैसे ही ट्रू है ऑलवेज. हाँ दिस इज ऑलवेज ट्रू. इसके लिए रेजोनेंस की कोई जरूरत नहीं है. ठीक ये है। एक जनरल ट्रुथ है. ओके दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट which is valid irrespective of whether it is a condition of resonance or not. ठीक है। This is the main one. ओके In an LCR circuit, this when they become equal is when resonance happens. हम्म ठीक है. अच्छा, अब यस सर। अगर इक्वल हो गए तो क्या होगा? What is the consequence of their being equal? So question is, okay, वो this कैंसिल is हो a, जाते हैं एक दूसरे को। फिर क्या हो जाता है? तो वो इक्वल टू आर आ जाती है। ठीक है, इम्पिडेंस, यस सर। राइट? इम्पिडेंस होती है R² प्लस XL माइनस XC बाय स्क्वायर, ये होती है. ये दोनों जो बराबर हो जाते हैं तो Z इज इक्वल टू R. फिर क्या हो जाता है? So you're on the right direction. यस सर। Direction is correct. Thought process is correct. ठीक है, आगे बढ़ो. What happens then? उसके बाद ये भी कर दिया, चलो. तो सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, ये भी बता दिया. हम्म बिल्कुल सही बताया, प्योरली रेजिस्टिव. ठीक है. कह सकते हैं कि इम्पीडेंस इज मिनिमाइज्ड.
हाँ, ये कह तो सकते पूरा ही चला गया। हैं। ठीक है, चलो और सोफिस्टिकेटेड वे में लिख लिया उसको। अब क्या होगा? सो करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमाइज्ड। हाँ, ये सर। वेरी इंपॉर्टेंटली, करंट बिकम मैक्सिमम। ओके, हम्म। और क्या हो जाता है? करंट मैक्सिमम। देखो, जब भी आप करंट या वोल्टेज की बात करते हो, उसके साथ उसके फेजर को भी डिस्क्राइब करना जरूरी है। हम्म। व्हाट इज द फेजर बिहेविंग लाइक? तो कैन वी से दैट द वोल्टेज एंड करंट फेजर्स विल बी इन फेज? जैसे आपने बोला कि इट्स अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो ये भी तो ट्रू हो जाता है। हाँ, ये सर, ये भी हो जाएगा। इन फेज होते हैं दोनों। हम्म। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस लिखी हैं हमने, दीज आर द कंडीशंस ऑफ द रेजोनेंस कंडीशन। करंट थ्रू द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम, दिस इज द मेन स्टेटमेंट। ये ये मैग्नीट्यूड की स्टेटमेंट है, ये हम्म। फेजर की है। वो करंट और वोल्टेज के साथ आ जाता है। ओके, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस। रेजिस्टिव होने का मतलब ही यही है। हम्म। ओके, अब क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? इसको और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? यस, तो ये कंडीशन हो गई रेजोनेंस कंडीशन। व्हाट डू वी हम्म। कॉल द फ्रीक्वेंसी जहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज मैक्सिमाइज्ड? सो अब आपका एम्पलीट्यूड हो गया आई नॉट, हम्म। highest possible current in the circuit. What is the name of the frequency at which the current attains the peak value? अच्छा, हाँ, नाम उसका। Natural or resonant frequency. ठीक है। ठीक है, this is हम्म। the, so I is frequency। और क्या होती है वो frequency? इससे derive होती है फ्रीक्वेंसी डिराइव। वन, ओमेगा एल इज इक्वल टू वन बाई सी। अच्छा, ऐसे, ठीक है, ठीक है। कंडीशन, दिस इज द फ्रीक्वेंसी वी आर रेफरिंग टू। हम्म, ठीक है। ठीक है, ओके सर। ये अगर आपको आ जाता है क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन the resonance condition for three marker, write everything down। हम्म। phase, ये इक्वल होता है, ये z इज इक्वल टू r है, I इज मैक्सिमाइज, ये फेज में है, द एक्सप्रेशन इज दिस एक्सेट्रा, सब लिखना है। हाँ। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक नंबर टू, which is the sharpness of resonance or the Q factor, quality factor। अब when you have this resonance happening and you have decided that I का जो amplitude है I naught is going to be V बाय आर नाउ, बिकॉज ये जेड ही है, अब बचा ही कुछ नहीं रजिस्टर के अलावा। दिस इज व्हाट इज यस। लेफ्ट, राइट? सो दिस इज योर पीक वोल्टेज एम्पलीट्यूड, तो ये भी पीक ही है। आरएमएस लिखोगे तो दोनों साइड आरएमएस लिख देना। नाउ व्हाट दे डू इन दिस इज दे से ओके, यू आर कैंसलिंग द reactance, right? So cancellation of reactance anyway is happening because this is a main condition for the resonance to happen, and that results in increased amplitude, highest amplitude. Now, यस सर। what you do is you keep changing R. R is changed. ओके। Okay, so R is changed, and so different values of R is used to do the same experiment, keeping XL is equal to XC. So the graph which you get is this. Okay, this is your
ग्राफ बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हम्म द ग्राफ बिटवीन करंट एंड ओमेगा। अगर ठीक आप है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हो तो आपको पीक मिलेगी, बट उससे हम्म पहले दिस इज व्हाट यू गेट। सो लेट्स ड्रॉ ऑन अ हाई रेजिस्टेंस, नंबर वन। और नंबर टू, ऑन अ रिलेटिवली लेसर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है जैसे जैसे हाँ। ग्राफ हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो करंट, यू नो, द करंट इज गिवन बाय V by R. If you lower the R, decrease the R, current increases. हम्म And I further decrease the, देखो करंट और ऊपर चला गया, right? यस So सर। this value, which is the peak value which you're getting, is the omega resonance, हम्म ठीक है। omega R. This is what represents, और इससे लेफ्ट और राइट में if you notice, omega is not at resonance, नहीं है। हम्म हाईएस्ट करंट तो यहाँ है। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड के बिहेवियर में we had said that current का जनरल एक्सप्रेशन इज गिवन बाय V अपॉन Z। एक ही जगह है जहां पे Z इज इक्वल टू R, विच इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये पीक वैल्यूज जो हैं, हाँ। ये रिप्रेजेंट करती हैं इस वाले करंट को, सिर्फ एक पॉइंट पे मैक्सिमम। बाकी लेफ्ट और राइट पे तो Z है, हम्म देयर इज नो रेजोनेंस at all other frequencies. Only at one frequency you get resonance. So you're getting peak everywhere, and you're drawing the graph of so at one place you got maximum value of the current. ये current है by the way. ठीक है। That is your I peak. So one I peak is this, second, third, depending on decreased value of R. R, you decrease R, increase the current. तो देखो current ऊपर चला गया। हम्म हाईएस्ट बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लोगे तो करंट छोटा सा ही आ रहा है, सिर्फ वेरी स्मॉल करंट यू गेटिंग। हम्म Okay. Now what we have to understand is we can see from the graph that as the value of resistance goes down, the there is a narrowness in the band. ये जो चौड़ाई है इसकी, ये वाली, हाँ। versus this versus this, right? हम्म कम होती जाती है, it becomes narrower. करेक्ट। It is becoming narrower. And first we will understand why this sharpness is increasing. जब narrowness होती है तो हम बोलते हैं sharp हो रहा है, resonance is sharper. हम्म Okay, and uh, the so this is the lowest R of the three. हम्म This is low, this is high. Okay. Now let's understand the behavior from this formula. Current generally depends on the value of impedance and is given by V upon under root of R square plus XL minus XC square. Can be reverse also. स्क्वायर के अंदर है, वी डोंट नो कौन सा बड़ा है, बट हम्म, जैसे जैसे हम अब कंट्रोल क्या कर रहे हैं, ओमेगा हाँ। फ्रीक्वेंसी इज बीइंग चेंज्ड ऑफ द एसी सिग्नल बीइंग सप्लाइड टू द सर्किट। नॉब है हमारे पास, और उस नॉब की हेल्प मदद से हम, यहाँ पे हमारे पास एक नॉब है, हम उसको चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, अलग अलग करंट आ रहे हैं, हम उनको मार्क कर रहे हैं। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या करंट है ये, इस फ्रीक्वेंसी पे क्या करंट है ये, इस फ्रीक्वेंसी पे क्या करंट है ये। एक फ्रीक्वेंसी आती है जहां पे करंट एकदम शूट कर जाता है ऊपर की तरफ, ये हाईएस्ट वैल्यू। हम्म, ठीक है। नाउ ठीक वी है। लेट्स अंडरस्टैंड लेफ्ट हैंड साइड पे व्हाई द करंट इज चेंजिंग। तो ओमेगा, so V upon under root of R square plus 1, sorry, omega L minus 1 by omega C, right? ये चेंज हो रहा है ना हाँ। I। तो if you notice the current is increasing in all three हम्म first half में till you reach the highest, है ना? हाँ।
लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये। ओके, मतलब मैथमेटिकली हम देखते हैं कि व्हाई दिस बिहेवियर इज बीइंग नोटिस्ड। ओके, तो एग्जैक्ट इंग्लिश पता होनी चाहिए, व्हाई दिस बिहेवियर इज हैपनिंग। यस, just for your information, very interesting observation is, if you draw a graph, we will come to this reasoning. You draw this graph which is appearing like this for the current, the graph of impedance looks like this. हम्म Look, as the frequency is increasing here, the impedance Z is decreasing and becomes हम्म lowest here. But the current therefore is highest. अगर impedance lowest है, Z is equal to R पे आ जाती है, तो करंट हाईएस्ट हो गया। तो लुक एट द यू नो द सिमिलैरिटी, बिल्कुल उल्टा ग्राफ है। हाँ द जेड इज गोइंग डाउन विच इज व्हाट वी वांट, मतलब तभी करंट बढ़ रहा है ना। ये करंट क्यों बढ़ रहा है? हाँ क्योंकि जेड इज गोइंग डाउन, डाउन जेड इज डिक्रीजिंग विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी। लेट अस अंडरस्टैंड द बिहेवियर। ये तो ऑब्जर्वेशंस हैं, बट व्हाट इज द सपोर्टिंग रीजनिंग? So if you have a situation where the first half, okay, so like look at the first, this particular situation. Okay, if omega is increasing, let me just write it in a reverse manner. V upon under root of r square plus omega 1 upon omega c minus omega L whole square. Just have written it reverse. If omega is increasing gradually, this quantity will become smaller. हम्म Omega छोटा हो रहा है. यस सर This quantity will become larger, अग्रीड right? So small quantity minus a large quantity is happening. Okay. तो एक्सएल तो हमेशा ही बढ़ रहा है. ओमेगा एल इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड the total reactance, which is XL, XC minus XL, right, will go down हम्म because something is getting subtracted from omega L. यस सर If you want to write, if you increase the frequency, this particular value, omega C, will go down and this will increase. Omega L will go up. ठीक है Okay? I'm just seeing NCERT. ये तो हमें पता है कि when the frequency reaches the resonant value, the impedance is equal to R and hence the current reaches its maximum value. हम्म Now the whole voltage is on the R, जो भी आपने अप्लाई करी थी वोल्टेज VR, हाँ सारी की सारी वोल्टेज, क्योंकि उन दोनों के अगेंस्ट वोल्टेज तो 180 डिग्री में है और कैंसिल हो गई है सारी. So that part is taken care of. I think जो explanation है increase की,
the quality factor on the left hand side, tuning of the quality factor. Just give me, let me check NCERT again. पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 है सर। पार्ट 2 है, ओके, पार्ट 2। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आएगा इसके बाद तो। हम्म। EMI के साथ होता है यार ये तो, फिर तो डुअल नेचर, आई थिंक इट इज, पार्ट 1 ही होगा फिर। यस। हम देख रहे हैं कि वो बढ़ क्यों रहा है करंट, हम्म। जैसे ओमेगा जो है वो, यस, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रेजिस्टिव, फेजर डायग्राम्स, रेजोनेंस, यस। Okay, let me just, what they've done is they've explained the phenomena of resonance, वो bridge वाला जो case है. Okay, let me just copy it exactly like they have. I'm just copying NCERT. ओके। Okay. So an interesting characteristic of any RLC circuit is the phenomena of resonance among systems that tendency to oscillate at a particular frequency, called the system's natural frequency. If such driven by an energy source at a frequency that is near to the natural frequency, the amplitude of oscillation is found to be very large. An example of this phenomenon is a child on the swing. The swing has a natural frequency for the swinging back and forth. If a child pulls on the rope at regular intervals and the frequency of the pulse is equal to the frequency of the natural frequency of the swing, मतलब basically कह रहा है कि he is explaining what is resonance, okay? ओके। So if you are in a park and you're sitting on this, right? तो ये जो सिस्टम है, हम्म। रोप और सीट, जो मान लो ये सीट है, ओके। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, आई थिंक लाइट गई, अच्छा। आ गई। एम आई स्टिल ऑडिबल? यस सर। ऑलराइट, स्क्रीन बंद हो गई है। ऑलराइट, so this particular situation where the rope and seat are there, this system has something called as a natural frequency. ओके। Even the buildings have natural frequency. हम्म। Now, if a child sits on this,
एंड स्टार्ट्स, कोई इसको धक्का मार देता है, लेकिन वो धक्का मारने की जो फ्रीक्वेंसी है इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। हम्म। मान लो इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स है, ओके। और आप भी इसको 1 सेकंड में 10 बार धक्का मारते हो, हम्म। ये जो स्विंग आपको दिख रहा है ये एबनॉर्मली हाई जाना शुरू हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस। लुक एट दिस, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द पुल। मैं पुश की बात कर रहा हूँ, यहां से कोई धक्का दे रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पुश इज ऑलमोस्ट द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विंगिंग। ये झूला 1 सेकंड में मान लो 5 बार आगे पीछे जाता है। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, 1 सेकंड में, काफी फास्ट है। हम्म। और आप भी इसको, लाइट गई, मैं ऑडिबल? यस सर। ओके, सो आई ऑल्सो पुश इट विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज 5 टाइम्स। उतने टाइम में मैं भी 5 बार अगर इसे धक्का मारूंगा, आई विल सी दैट दिस स्विंग, अच्छा वोंट वर्क, वी कैन डिस्कस देन, दिस स्विंग विल ऑल्सो मूव वेरी हाई। इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो नॉर्मल था ऐसे, हाँ। वो सडनली ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी तो रहेगी 5 ही इसकी, और हम्म। मैं भी इसको पीछे से 5 बार धक्का मार रहा हूँ। जब भी पीछे आता है मैं इसको धक्का मारता हूँ, तो मेरी, आई एम पुशिंग इट 5 टाइम्स इन इट्स 5 नेचुरल फ्रीक्वेंसी। व्हाट यू विल नोटिस इज, जनरली आप जब धक्का मारते हो तो बंदा उतना ही ऊपर जाता है ऐसे ही, थोड़ा बहुत ऊपर हम्म। नीचे जा सकता है वो, लेकिन अगर आपने उसको मैच कर दिया उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विंगिंग से, फ्रीक्वेंसी ऑफ पुश और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विंगिंग बराबर हो जाए, यू विल फाइंड कि ये जो है ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। So you have to be very careful when you're doing, this swinging game with a child, that हम्म। you don't push him with the same frequency as the natural frequency of the swing. ओके। तो amplitude बढ़ जाता है। In the same way, in the RLC circuits, the frequency which you have, uh, the LRC circuit has, if you also apply a frequency which is equal to the natural frequency of the LRC circuit, which is 1 by under root LC, then you will see abnormal current. This is the phenomena of resonance. That if your if your system, which is the LC circuit, जिसके, and what is happening in that, जो magnetic energy है इंडक्टर की, that magnetic energy and the electric field energy between the capacitor and the inductor keep on oscillating between them. अच्छा। एनर्जी तो ट्रैप हो जाती है, एनर्जी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। वो तो भाई ऑसिलेट कौन कर रहा है, दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? एलसी सर्किट में ऑसिलेट कौन कर रहा है? बच्चा तो है नहीं, देयर इज नहीं। नो चाइल्ड, द हम्म। एनर्जी इज ऑसिलेटिंग इन दिस। हम्म। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स सी, वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने से, ये वाली, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये करंट क्यों बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, राइट? फिर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया और उसके बाद गिरने लग गया। हाँ। ओके, सो दिस इज द ग्राफ विद 1 हेनरी, टू वैल्यूज ऑफ आर, दो वैल्यूज लिए। ऑब्वियसली छोटे आर पे यू हैव मोर शार्पनेस, करेक्ट। the blue one is this. Wait for a while before we justify this increase. Okay, we see that the हम्म। current amplitude is maximum at resonant frequency. ठीक है, तो आप वैसे तो आप किसी बच्चे को धक्का मार सकते हो किसी भी फ्रीक्वेंसी से। आपका हम्म। मन आया, आपने बोला चल अभी नहीं मारता, मैं थोड़ी देर, मैं तो आई विल पुश हिम थ्राइस instead of 5 times. 5 hertz is the natural frequency, but you push him 3 times. हम्म। थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, बट अगर आपने 5 टाइम्स ही उसको पुश करा 5 फ्रीक्वेंसी के साथ, वो एबनॉर्मली ऊपर जाएगा। इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस। ठीक है। ठीक है, ओके, सो resonant frequency have variety of applications in the tuning of the radio set. The antenna of the radio accepts signals from many broadcasting stations. The signal picked up in the antenna acts as a source in the tuning circuit of the radio.
द सिग्नल पिक्ड अप इन द एंटीना एक्ट्स एज अ सोर्स इन द ट्यूनिंग सर्किट। ठीक है, अभी सर्किट में सिग्नल को जाना है, तो एंटीना इज द वन विच विल पिक अप द सिग्नल। सो द सर्किट कैन ड्रॉ can be driven at many frequencies. But to hear one particular radio station, we tune the radio. In tuning, we vary the capacitance of the capacitor in the tuning circuit, वो जो मैंने बोला था नॉब को घुमाते हैं, such हाँ। that the resonant frequency of the circuit becomes nearly equal to the frequency of the radio signal received. When this happens, the amplitude of the current with the frequency of the signal of the is maximum. It is important to know that the resonance phenomena is exhibited by a circuit only if L and C are present. Only then do the voltage appears across L and C cancel each other, which you said 180-degree apart, both being हम्म। out of phase and the amplitude is maximum. The total voltage is now appearing across R, क्योंकि VL माइनस VC तो जीरो हो गया, तो सारी हाँ। वोल्टेज जाएगी रेजिस्टर के ऊपर। तो इसका मतलब है कि the phenomena of resonance needs LNC. You cannot have a LNC phenomena, sorry, resonance phenomena with RL and RC circuits, क्योंकि हाँ। cancellation of the VL and VC cannot happen in them. आप चाहते हम्म। हो सारी वोल्टेज VR पे आ जाए, तो ये एक पैराग्राफ है which explains why the phenomena of resonance can only happen for LC circuit and not other type of circuits. हमने और भी पढ़े ना, हाँ। RL, RC। भैया RLC में ही क्यों होता ही है, क्योंकि RLC में we have an opportunity for XL and XC to go cancel out each other, and the हम्म। whole voltage which you were applied will appear across। यहाँ तो वोल्टेज खत्म हो गई, VC और VL ने कैंसिल कर दी, एंड वी VC and VL कैंसल्ड, सारी हाँ। वोल्टेज यहाँ पे आ जाती है VR पे। ठीक है, ठीक है। वेट, ओके ओके, सो दे हैव नॉट really gone into the depth of explaining the हम्म। reduction of the current and increase in current. Why in these circuits? Just give me 1 second. Let me see if I can still get that. ओके। There is an explanation available. थोड़ा सा मैथमेटिकल है कि ओमेगा बढ़ रहा है तो denominator increases, denominator goes up. Just see, let me see if I can still find it. It will be interesting to do that. So this is yes. Okay. All right. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आई एम गोइंग वेरी स्लो ऑन रेजोनेंस। हम्म। न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग, मतलब पूरा ही इसी के ऊपर होता है। ओके। ओके, think I found something not। टॉपिक इज essentially इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट कट डाउन, लार्जली कट डाउन कर दिया है। अच्छा। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। हम्म। हमें तो कराई थी यार।
ओके, ऑलराइट, let's forget the explanation of the behavior of the graph. Okay, instead what we do now is focus on one more quantity called as the bandwidth. हम्म Okay, and let's come to the next one. So the topic is the topic of bandwidth. Okay, now what happens is there are certain frequencies, okay, which are seen. Okay, before we do that, let's talk about the sharpness. तो पढ़ता हूँ sharpness ही रहते, which हाँ is popularly called as quality factor. ओके Okay, so the quality factor of a series is defined as a ratio of the resonance frequency, जो resonance पे frequency आती है वो, divided by the difference in the two frequencies taken on both the sides of the resonant frequency, such that each frequency the current amplitude becomes 1 by root 2 times. तो ये जो हमारा ग्राफ है रेजोनेंस का, अगर मैं ग्राफ बनाऊं ये वाला, कि मैंने, इट कम्स लाइक दिस, तो इस साइड और इस साइड दो फ्रीक्वेंसीज, जहां पे द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज पीक का 1 बाय रूट 2, हम्म यहाँ पे पीक करंट आ जाता है ना ओमेगा यस आर पे, यू हैव आई पीक इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर। आपका हम्म जनरलाइज करंट जो होता है दैट इज आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, ये जनरल करंट है। अगर ये हम्म करंट इक्वल टू में डाल दूं इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू, आई नॉट मुझे मालूम है वी नॉट बाय रूट टू होता है, वी नॉट बाय आर, हम्म पीक करंट, सिर्फ रजिस्टर रह जाता तो मैंने डाल दिया। एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू पीक के 1/रूट 2 होती है, हाँ मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, ये कट गया, तो आई गेट आर रूट टू इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर, आर रूट टू इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल ओमेगा सी होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, रूट टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा एल स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर, आर इज इक्वल टू ओमेगा एल minus 1 by omega c. Right. If you do this calculation and solve this for omega, you will find that omega जो आता है, जहाँ पे ये जो ओमेगा को ये सॉल्व कर लो, अगर आप मान लो x से ये, तो वो ओमेगा आ जाएगा जहाँ पे करंट वाज 1/रूट 2, हम्म हमने डाला है देखो ये, हम्म मैंने आई को लिखा जनरल वैल्यू और फिर बोला आई इज इक्वल टू आई/रूट 2। सो इस इक्वेशन से जो आएंगे वैल्यूज ऑफ ओमेगा, वहां पे करंट इज 1/रूट 2 द मैक्सिमम करंट। तो अगर आपका मैक्सिमम करंट सेंटर में है, पीक करंट, उसके लेफ्ट और राइट पे दो रूट्स आ जाएंगे, यहाँ और यहाँ पे, जहां पे ये करंट इज गोइंग टू बी I/√2, ओके दोनों साइड पे हम्म पीक का I/√2, राइट। तो इस रेंज को, चौड़ाई को, जो बेसिकली है, दोनों ही वो वाली एक फ्रीक्वेंसीज है जहां पे करंट की वैल्यू 1/√2 टाइम्स द पीक होती है, इस गैप को बोलते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू बैंड विड्थ।
Okay. बैंडविड्थ, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, where the value of the current amplitude becomes 1 by root 2 times the peak current. तो वो जो डिफरेंस है इन दोनों का, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दैट कम्स आउट टू बी द bandwidth. And quality factor of a sharpness of resonance is defined as a quality factor is given by omega at resonance divided by ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये ओमेगा 2 है, ये ओमेगा 1 है। ठीक है। Quality factor is defined as the frequency of resonance, which obviously is 1 by under root LC. हम्म। और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के लिए you have to solve this equation, which means first you write what is the general value of the current, put it equal to I naught by root 2, and then put it equal to V naught by R by root 2। ये तो हमारा P की है, बट रूट 2 टाइम्स है वो करंट इस समय, तो आई आ गया ये। और एंड स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेटेड इक्वल टू वी नॉट बाय आर इज इक्वल टू दिस। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई, रूट 2 स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, यू गेट दिस। इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन व्हिच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, you will get the, matlab this looks like this: r is equal to xl minus 1 by xc, r is equal to x square lc minus 1 upon xc, uh, x square lc, इसको मैं इधर ले आता हूँ, माइनस एक्स आर सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इन ओमेगा। हाँ। सॉल्व कर लो, you will get the values of omega. Two roots will come, which will be omega 1 and omega 2. Difference of the two roots, put it here. ये दो वो frequencies हैं, ये वाली, जहां हम्म। पे वैल्यू ऑफ द करंट इज 70% ऑफ द पीक वैल्यू, ओके। राइट? सो एंड सब्ट्रैक्टेड, दिस इज कॉल्ड द bandwidth of the sharpness of the resonance. Oh, so omega 2 minus omega 1 is the bandwidth, and if you keep it in the denominator, keep omega r in the numerator, then the quality factor is written as resonance frequency divided by the difference of the frequencies where the current amplitude becomes 70% of the peak. This term is called as the band गुड। width, bandwidth. If you solve the quadratic equation which I told you, हम्म। okay, if you solve that quadratic equation, hmm, so define bandwidth, okay? ओके। Define bandwidth, for example, okay? So let's say very basic question. तो define करो जी bandwidth को, हम्म। nothing to worry. This will help you understand from the meaning of bandwidth. Read it. देखो समझ में आता है, हमने तो अभी डिस्कशन करी थी सिर्फ। हाँ। See if this is it's a range, देखता right? हूँ। From here to here, that range omega 2 minus omega 1.
लुक एट दिस, सेम डिस्कशन नाउ बीइंग गिवन वर्ड्स। हम्म। देखो, F1 आ रही है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, हम्म। करंट अभी भी 70.7% ऑफ द पीक है, ये पीक है, इसका 70% है ये। तो पहली ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, हम्म। इसको बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो दूसरी साइड आ रही है उसको बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वहां पे भी करंट की वैल्यू 70% ही है। ठीक है। मोर वर्ड्स एंड मोर वर्ड्स। हम्म। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन the bandwidth frequency and the resonance frequency also is, if you look into this expression, although derivation उन्होंने दी नहीं है, but you should know that वो जो upper cutoff frequency और lower cutoff frequency है, हाँ। omega 1 multiply by omega 2 is equal to omega r square। ठीक है। ये lower cutoff frequency है जहाँ पे the current is 70% of the peak, ये upper cutoff frequency है where the current is 70% of the peak, दोनों का product is also equal to omega r square। this is the resonance जहाँ peak आती है, हम्म। मतलब omega r anyways we know। ठीक है। ठीक है जी। यस सर। ओके, द अदर रूल आई डोंट नो व्हाई दे हैव प्रूव्ड ऑल ऑफ दिस, खत्म कर दिया इन्होंने बिल्कुल, मतलब दिस अब वाज। तो एनसीईआरटी काफी खराब हो चुकी है। हाँ, समझ नहीं आ रहा मुझे, मतलब मुझे मैंने भी। भी करा हुआ है ये पहले, बट ऐसा तो कभी भी नहीं करा यार, बड़ा अजीब सा है कि मैंने भी कुछ कल लिखा ही नहीं खोली तो हुआ काफी दिक्कत हो गई है। है। कल पढ़ रहा था मैं भी तो काफी दिक्कत हो रही थी। हाँ, मतलब थोड़ा सा खराब है। समझ नहीं आया कि इन्होंने ये मतलब पूरी वो तो डेरिवेशन है वो गायब है, और फॉर्मूलाज गायब हैं, एग्जाम्पलर में जाओ तो पूरे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। वही चक्कर है। इन्होंने एनसीईआरटी अपडेट कर दी, एग्जाम्पलर नहीं करी। एग्जाम्पलर में थ्योरी डाल देते ना, हाँ। जैसे यस सर। मैथ्स में डाली है। इन्होंने एग्जाम्पलर में एक भी अपडेट नहीं करा। क्वेश्चन डाल दिए बस, मुश्किल मुश्किल। यस सर, वो अच्छा भी नहीं ओके, करे, इफ यू, वो भी पुराने ही है। हाँ इफ यू सॉल्व दिस, ये वाली इक्वेशन जो बनाई है ना हमने हम्म। √2r की हेल्प से, ओके, सो कैसे करा था हमने, सी व्हाट वी डिड वाज वी सेड कि अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे द करंट इज √2 70%, सॉरी, आई नॉट बाय √2, राइट। सो यस लेट्स सर। से आपकी जो वो है इम्पिडेंस उस टाइम पे ओमेगा रेजोनेंस पे तो आर ही होती है सिर्फ, व्हेन यू आर एट रेजोनेंस योर इम्पिडेंस इज ओनली आर, but हम्म। when you're at omega 1 and omega 2, which are the cutoff frequencies, your z is r by √2। करेक्ट। 70% ही रह जाता है आपका करंट, सॉरी रूट हम्म। टू आर हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस और छोटा हो गया तो करंट यस और सर। बढ़ जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है हाईएस्ट करंट पे ऑलरेडी हो। सो योर इज इनटू √2, तब इम्पिडेंस बढ़ेगी तभी करंट कम होगा 70% से, बिकॉज हम्म। आई पीक इज गिवन बाय v बाय z इज इक्वल टू v बाय r। आई पीक है ये, और हाँ। जो 70% है इसका वो तो हो गया v बाय √2r। ये हो गया एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, 70% ऑफ पीक। हम्म। ठीक है। अब यस सर। तो हमें मालूम है कि ये इस समय जो रेजोनेंस तो हुआ नहीं है, नहीं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे रेजोनेंस तो हुआ नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, यहाँ यस सर। रेजोनेंस हो गया।
सिचुएशन हाँ। नंबर 1 में पीक जगह पे जो हाईएस्ट यस। पॉइंट है, ये पता है। अब हम निकाल रहे हैं ये। तो यहाँ पे z इज रूट रूट टू आर, और रेजोनेंस नहीं हुआ तो z तो इम्पिडेंस तो एग्जिस्ट करती है। सो इम्पिडेंस इज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू रूट टू आर दिस टाइम। ये हम बात कर रहे हैं इसकी। इम्पिडेंस कैंसिल नहीं हुआ ये दोनों भी। हाँ। यस सर। कट ऑफ, अपर कट ऑफ पे कोई कैंसिलेशन सिर्फ पीक पॉइंट पे होती है, टॉप पॉइंट पे ऊपर, यहाँ नहीं होती। तो ये ठीक है। ये रूट टू आर के बराबर होता है इम्पिडेंस, ये भी हमने ढूंढ लिया। इफ यू सॉल्व ऑल ऑफ दिस एंड से ओके लेट द टू रूट्स बी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, मैंने भी इसको सॉल्व करा था, तो एक आएगी इक्वेशन आपकी ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 1 c इज इक्वल टू आर। ये मैं ऊपर एज अ क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, ये वाली इक्वेशन। तो इसने बोला लेट द टू रूट्स बी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इधर। तो एक बार ओमेगा 1 डाल रहा हूं मैं, देखो। अब दूसरी बार मैं ओमेगा 2 डाल रहा हूँ। ठीक है। क्वाड्रेटिक के दो रूट्स मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए और लिख दिए। राइट। इन दोनों को ऐड कर दो, 1 and 2 को लेफ्ट में। आई वाज ट्राइंग टू डिराइव द वैल्यू ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। नाउ ऐड 1 and 2। If you add 1 and 2, you will get the values as omega 1 plus omega 2 into L minus 1 by C, omega 1 plus omega 2 is equal to सॉरी, ये माइनस आ रहेगा अगर आप करोगे तो। हाँ। दूसरे, एक बार माइनस आ रहा है क्योंकि ये जो है इक्वेशन, दो रूट्स आने चाहिए इसके, ये वाले इसके। ये सॉरी, मैं आई टेक यू अप यहाँ पे। ये इसका अगर स्क्वायर रूट लोगे आप दोनों साइड का, तो इट विल बी प्लस माइनस आर। ये आर स्क्वायर है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। यस सर। टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ। तो ये प्लस माइनस आ रहा है, एक बार माइनस आर डाल रहा हूँ, एक बार प्लस आर डाल देते प्लस हैं। आर। ठीक है। सो इफ यू ऐड राइट साइड तो जीरो हो गया, हम्म। माइनस आर प्लस आर। सो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 is equal to you will get it equal to 1 by omega 1 plus if you add then you have to take omega 1 l plus I minus 1/c। अच्छा सॉरी, ये है 1/ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ही तो है ये। एक मिनट। अच्छा नीचे इसमें सॉरी, ये दिस इज c के साथ तो डिनोमिनेटर में है ना, लुक एट हम्म। दिस। सो दिस इज these to get added and minus 1 upon omega 1 plus 1 upon omega 2 into c. Omega 1 ठीक है। plus omega 2 into L is equal to omega 1 plus omega 2 omega 1 omega 2 c। तो ये कट गया। हाँ। सो omega 1 omega 2 is equal to c by L। हम्म। नहीं, एल सी सॉरी, नीचे है। अच्छा अच्छा। वेट। सो omega 1 प्लस ओमेगा, इन दोनों को ऐड करा, ये आया हम्म। -1/ओमेगा c। ओहो, ये भी तो नीचे ही है, दिस 1/c। हम्म। 1/c है ना ये। यस सर। सो दिस इज 1/c। और तो ये दोनों कट गए, और ये मल्टीप्लाई बाय एल हो रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट पे चला गया, ये वाला हम्म। omega 1 omega 2, और ये 1/c जो है ये बन गया 1/LC। ये एल नीचे ले आओ, हम्म। ये वाला इसके साथ। सो omega 1 omega 2 इज इक्वल टू 1/LC। व्हाट इज दिस? 1 अपॉन रेजोनेंस का स्क्वायर, वही बोला था।
ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओमेगा 2 प्रूवन। ठीक है। ठीक है, सो फर्स्ट दीज टू रूट्स जब डालने पे इक्वेशन बनी, ऐड 1 and 2। इन द सेकंड सिनेरियो सब्ट्रैक्ट 1 and 2। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज टू। ये डेरिवेशन है ना इसकी? हाँ, subtraction of 1 and 2 from 2। ओके। Okay, now subtract the 2 to get omega 2 minus omega 1 L plus 1 by C omega 2 minus omega 1 upon omega 1 2 is equal to 2R। वो R minus R plus बन गया। हम्म। Okay, so this is omega 2 minus omega 1 L, very common, L plus 1 upon C omega 1 omega 2 is equal to 2R। Solving you will get the difference between the two। यही रूट बना लो, omega 2 minus omega 1 is equal to R by L। इसमें क्या यूज करना है, omega 1 omega 2 is equal to 1 by LC, and you will get this second result। The product of the cutoff frequencies is omega R square। The difference, ये omega 2 कट अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी राइट साइड वाली ग्राफ में, हाँ। ये वाली साइड की। सो हम्म। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज आर बाय एल। ठीक है। The quality factor we had defined as the omega resonance divided by bandwidth is equal to omega r upon omega 2 minus omega 1। ये आ गया, omega 2 minus omega 1 is r by l is equal to omega r divided by r by l is equal to omega r l by r। One more result, okay? And this is also known as voltage magnification। हम्म। ठीक है। How? Because Q they have written as equal to omega resonance multiplied by L by R। Divide and multiply this with the current flowing in the circuit, IRMS. Okay, so this is the peak voltage which is there, V peak, and this is the uh, voltage across the inductor at that time। हम्म। Omega L is the inductance, XL multiplied by IRMS। So this is the voltage across the inductance divided by V peak। This is called as voltage magnification। Ratio आ गई दो voltages की। यस सर। Okay, so not only you define Q as the sharpness of the resonance, but you also define it as the uh, voltage magnification। So Q is also used to uh, explain the sharpness of the resonance, and also used as the quality factor, sorry, used as the, but is also defined as the voltage magnification। So when we say sharpness, let me just go back to sharpness part of it। हमने ये जो ग्राफ बनाए थे इतने सारे, एक मिनट, वी थिंक वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, ये दिख रहे हैं आपको ये? हाँ। Okay, I will just copy this and now discuss what is the context of the word
आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज नाउ so that we are able to. बहुत कुछ हो गया. हम्म. Busy slide, right? Very busy. यस सर. ओके. So busy that. तो if you consider this particular topmost graph, ये वाला, हम्म. ये टोटल बैंडविड्थ है. क्योंकि 70% ये वाली जगह है, ये वाली, ये 70% है इसका. इफ यू गो टू द ओके. नेक्स्ट ग्राफ, उसका 70% यहाँ पे है. और इफ यू गो टू नेक्स्ट, ये वाला 70% है. हम्म. तो दिख रहा है आपको कि जो सबसे नैरो है वो ये है. हाँ. जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे ऊंचा है उसके 70% यहाँ आ रहे हैं. हम्म. काफी नैरो बैंडविड्थ है, छोटी सी ना, हम्म. चौड़ा नहीं है ज्यादा. नीचे चौड़ाई ज्यादा है 70% की. यस तो सर. ये जो बैंडविड्थ है, ये जो लोअर द बैंडविड्थ, जितनी कम बैंडविड्थ है उतनी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है. हम्म. ओके, सो स्मॉलर इज द बैंडविड्थ, स्मॉलर इज द बैंडविड्थ, जिसको मैं चौड़ाई बोल रहा था. हम्म. स्मॉलर द बैंडविड्थ, शार्पर इज द पीक. ओके. So let's do a summary. हम्म. स्लाइड समरी है, कोई खास नहीं. सो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वी ऑलरेडी नो कैसे निकालनी है, 1/√LC. यस क्वालिटी सर. फैक्टर इज ओमेगा रेजोनेंस डिवाइडेड बाय द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अपर एंड लोअर, is given by omega r by L by R, sorry, L by R, and we can put omega r is equal to under root of 1 by LC. So this will become 1 by R under root of L by C. हम्म. What is the definition of the bandwidth? What is bandwidth? ऊपर पढ़ी थी हमने definition. Sorry, previous page, right? यस पेज Previous है. page. हाँ. I think we have to be very strong on definition front. बिल्कुल. ये देखो तो. In the case of resonance, the whole voltage appears across resistor. True or false? ट्रू. Yes, true. Very much true. It does. यस सर. Let's do a small quiz so that, let's see, retain करने के लिए you will have to go through this again. But let us see if a small quiz like this helps you absorb it better. Okay. Chalo. You draw a diagram, okay? Let me ask you to draw a diagram. I'm going to page 3 now. Go to page 3. Now, what you have to do is please draw a graph that represents uh, resonance
at two different resistors and label the graph. रेजोनेंस हो गया। हम्म, अब आपको ग्राफ बनाना है आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ। प्लीज ड्रॉ एन आई वर्सेस omega graph, and in this graph please show the marking of bandwidth, resonant frequency, the 70% of the current, show all, and the resonant frequency at two different resistors. Do the same experiment of resonance। सिर्फ ग्राफ okay, बनाओ जो बनाते रहे शार्पर वाला। हम्म, बनाओ, you have to make it। yes, sir. सी लेट मी सी, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, नॉर्मल, कोई नथिंग न्यू। ठीक है, इट डजंट टच the x-axis omega. Be very careful. It doesn't touch. It always starts from here. Okay, Current is not zero. R तो रहता ही रहता है। R अगर हम्म, जीरो हो गया तो फिर सर्किट इम्पॉसिबल एक्सपेरिमेंट। अच्छा, करंट जीरो तो तभी हो गया ना, मतलब या तो आर हम्म, इनफाइनाइट है आपका, यू डूइंग हम्म, इट।
ठीक है। शो द पीक वन ऑल्सो राइट इन द सेंटर, ये वाली, ओमेगा आर। वेयर इज द आई पीक? टॉप पे। हम्म, यहाँ मैच करो, ये आई पीक, इसको लिखो आई पीक। यस, सही बनाया। राइट द फॉर्मूलास। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज? इक्वल टू प्रोडक्ट ओमेगा वन इंटू ओमेगा टू इज गिवन बाय। ओमेगा। राइट दीज थ्री ऑल्सो।
Okay, what is the other name given to quality factor? Sharpness of resonance. अच्छा हाँ, यस इसी सर। की चौड़ाई से डिसाइड हो रहा है ना कि कितना चौड़ा है वो। यस सर। I'm actually surprised at the trash which is given in this chapter. कुछ चैप्टर अच्छे यस लिखे हैं, बट ये तो ट्रैश है। यस सर बिल्कुल। जो लिखा है ठीक लिखा है, लेकिन एक कम लिखा हुआ है थोड़ा। They could have added 2 pages, 2 extra pages would have helped us, but I don't know क्या था दिमाग में लिखते हुए। Okay, fill in the blanks. The range of frequencies over which an oscillator resonates, इस रेंज में ऑसिलेशंस अच्छी नजर आती हैं, मतलब रेजोनेशन ज्यादा हो जाती हैं। दैट व्हाट इज दैट रेंज नोन एज? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज over which an oscillator resonance is called as bandwidth। हाँ यस। इस रेंज में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आई डोंट नो इनको देना इतना लिख देते अगर ये तो कैसे लोग समझ पाते उसको। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ। लिखा है ये रिटर्न। इनवर्स मतलब ऐसे हाँ। हाँ, वैसे तो इनवर्सली। इनवर्सली है। इनवर्सली, इनवर्सली है। राइट। ठीक है, फेयर एनफ। मतलब ये तो वो है कि बीच बीच में से ना, मतलब कोई जो बेस्ट हम्म। मिल जाए कहीं से, यस सर। कोई सिंगल सोर्स से पढ़ना इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि द कोर्स इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो यू हैव टू बी वेरी।
ओ माय गॉड। Let me see if I can get some good written notes on this topic. यस सर। Which problem is that those notes will be so detailed they will take you into an area they should not. Oh, अच्छा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ले जाएगा फिर आपको घुमा के, तो आई एम ओ। नॉट श्योर इफ यू वुड लाइक टू go in that direction at all. ठीक है, जो मिलेंगे मुझे आई विल सेंड यू। ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, ये हमने बेसिक्स कर लिया थोड़े से, हम्म। क्वालिटी फैक्टर, और उसके अब इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और उसके ही थ्रू और भी डिटेल में जाएंगे थोड़ी सी थ्योरी के। आई थिंक 1-2 hours more are required to at least have a very good grip on the theory हम्म। एंड न्यूमेरिकल्स। 2 घंटे यस। और लगेंगे, थोड़ा सा उसमें थ्योरी भी डिस्कस होती रहेगी और ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो मिलते हैं, लेट्स मीट इन द इवनिंग एंड यस सर। कंटिन्यू टू डिस्कस दिस। ठीक है सर। ठीक है, सी यू इन द इवनिंग देन। बाय।